Chapter number 5, that is query processing and optimization. So first of all, you people know that you are writing SQL query in your Apex or in SQL or in Oracle, right? But you do not know how it is processing, how the system is understanding the query and how the query is selected, or you can say if there are more than one way to write the query and get the answer, right? There can be many queries for same answer. So how you are going to select or how the system is going to select which query to be executed, right? So there are many factors that you need to keep in your mind. For example, cost can be one of the factor, then human resources can be one of the another factor, right? How you are going to decide that which query you needs to execute, the query in which you have to give less input and you will get the correct output that you are going to write, right? If there are 5 queries, then you will see on the basis of cost, on the basis of length, that on the basis of memory power, on the basis of correct answer, you are going to see which query will give me the answer, then you are going to select the query accordingly, right? So here we will be discussing, in this chapter we are going to discuss how your query is processed by the machine and how it can be optimized and you can get the correct answer, exact answer. Okay, so this chapter is all about query processing and optimization. So these are the topics which we are going to cover in this chapter. First one is query processing, then measures of query cost, then selection operation, then join operations, then evaluation of expression, query optimization, and equivalence rule. So these are few topics which we are going to cover in this chapter. Now, first of all, your first topic here in this chapter is query processing. How your query is going to be processed in the system, how you are going to get the correct output. Fine. So, query processing refers to the range of activities involved in extracting data from a database. So, there are few activities. Okay, there are range of activities which are involved in extracting data from the database. Okay, you will write the query, then machine will change the query from your language to its own language, then that query will be processed, then it will be optimized, then you are going to get the correct answer. Fine. So this is the scenario. So here in query processing, we are having basically 3 steps. First one is processing and translation. Second one is optimization, and third one is evaluation. Okay, let us understand this diagram first, then we are going to understand each topic. So first of all, see, here you are, when I'm saying that in query processing, let me say here, what you are going to do, your query, you are going to write the query that will be, this is your query that you have written in higher level language, SQL, right? You are writing query in higher level language, and what query processing activities are doing, they are converting, this is in higher level language, so I can write here HLL, sorry, high level language, and it will be converted into machine level, or you can say low level. Okay, so that machine will understand. For example, if I'm saying how are you, so computer is not understanding how are you. Computer is having its own language, right? So that language is machine language. So this will be referred as lower level language. Right? Now, here in query processing, what we are doing, we are writing one query. This query is written by the user. Then it is parser and translator. So here parser and translator, you know what is parser, right? In compiler, you know what compiler do? Compiler does the same thing, right? It will take your query which you are writing, it will take your program in C language, then it will generate that program in machine's language, and it will give you the output. That is the work of compiler, right? तो compiler में parser क्या करता है? Parser is going to check कि आपने जो भी syntax लिया है वो syntax सही है या नहीं. आप कहीं पे inverted comma करना भूल गए, आप कहीं पे closing bracket करना भूल गए, ठीक है? तो लैंग्वेज के हिसाब से उस सिंटेक्स पे आप वर्क कर रहे हो या नहीं, पार्सर इज गोइंग टू चेक दैट थिंग. ओके, फॉर एग्जांपल इफ आई एम राइटिंग, let me say, if I'm writing int I equals to 0, and then I will start from next line, is it okay? It is not okay. Why it is not okay? Because you need to keep that semicolon.
ठीक है, इंट आई इक्वल्स टू 0 के बाद आपको सेमीकोलन लगाना होता है, तो वो आपकी सिंटैक्स एरर हो गई। तो पार्सर क्या करता है इन कंपाइलर, व्हाट डज पार्सर डू, पार्सर चेक द syntax of the program, and then accordingly it is going to give you the output, right? Parser is going to do that. So same thing will be done here, सेम थिंग इज गोइंग टू बी डन हियर। यहाँ पे पार्सर क्या करेगा, आपकी क्वेरी सही है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपने जो रिलेशन का नाम लिखा है इंसर्ट इनटू टेबल नेम, तो वो टेबल नेम एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है आपके डेटाबेस में या नहीं। आप क्रिएट करने से पहले अगर आप इंसर्ट करोगे तो इज इट गोइंग टू वर्क? It is not going to work. First you have to create the table, then you are going to insert the values, right? So same way what here it is done in parser, पार्सर विल फर्स्ट चेक कि व्हाटएवर आपने जो भी किया है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है तो आपने जो भी नाम लिखा है वो नाम सही है या नहीं। ठीक है, तो ये सब चीजें किसको कौन ध्यान में रखेगा? पार्सर। फॉर एग्जांपल अगर आप क्वेरी में लास्ट में सेमीकोलन करना भूल गए तो पार्सर इज गोइंग टू से यू दैट यू हैव फॉरगॉटन, मींस देयर इज वन मिस्टेक, सेमीकोलन इज मिसिंग, राइट? इफ आप अगर इन्वर्टेड कोमा करना भूल गए या फिर नंबर में आपने इन्वर्टेड कोमा किया, तो पार्सर को पता है कि आपकी सिस्टम की लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज वो एक्सेप्ट करता है। फाइन, सो पार्सर इज नॉट गोइंग टू वर्क विदाउट दैट लैंग्वेज, इट इज नॉट गोइंग टू गो आउट ऑफ द सिंटैक्स। ओके, सो पार्सर इज गोइंग टू चेक द सेम थिंग। एंड ट्रांसलेटर, व्हाट इज ट्रांसलेटर? ट्रांसलेटर क्या करेगा यहाँ पे, आपकी लैंग्वेज को ट्रांसलेटर मशीन लेवल की लैंग्वेज से ट्रांसलेट करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी लैंग्वेज है, दैट्स फाइन। नाउ मशीन कैसे वर्क करता है वो उसकी लैंग्वेज में चेंज करेगा। ठीक है, तो ये किस पे होगा? पार्सर एंड ट्रांसलेटर। ओके, सो आफ्टर पार्सर एंड ट्रांसलेटर देयर इज relational algebra expression. So what relational algebra expression will do, it will give you the best query. Okay, it will give you few queries. Relational algebra expression, it will give you few queries, then it will go to optimizer. First of all, what is the meaning of optimizer? What is the meaning of optimizer? Basically अगर किसी चीज को ऑप्टिमाइज करना, दैट मीन्स टू रिमूव फ्यू थिंग्स विच इज अनयूज्ड, और रिपीटेड चीज कोई है तो उसको आप ऐड मतलब कंबाइन कर दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं, मैंने आपको एक बॉक्स दिया कि आप इसमें सारे चीजें अपनी डाल दो, तो आपने अगर आपके पास 5 to 6 बॉक्सेस है तो आपने वो सारे बॉक्सेस एक दूसरे के ऊपर डाल के रख दिया, तो आपका बैग आपके बैग में वो सारे बॉक्सेस नहीं आएंगे, सारा सामान आपके बैग में नहीं आ सकता। सो व्हाट यू पीपल आर गोइंग टू डू, यू विल अप्लाई योर इंटेलिजेंस देयर, और आप एक बॉक्स के अंदर दूसरा बॉक्स, उसके अंदर तीसरा बॉक्स, ऐसे करके डालोगे। तो क्या होगा कि वो स्पेस थोड़ा कवर करेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो बैग में सही से आ जाएगा। वी आर गोइंग टू डू दैट, राइट? तो ऑप्टिमाइजर क्या करता है, पूरा टेबल चेक करेगा, उसमें अगर रिपीटेड डेटा है या फिर रिपीटेड कोई थिंग्स है तो वो उसको कंबाइन कर देगा और एक ही चीज दिखाएगा। कोई अनयूज्ड चीज है तो वो निकाल देगा। अगर आपका बैग फुल हो गया और आपको कुछ और चीज चाहिए तो आप क्या करोगे, अनयूज्ड चीज जो है वो निकाल दोगे, राइट? सो ऑप्टिमाइजर, ऑप्टिमाइजिंग समथिंग, दैट मीन्स आपको एक एक्यूरेट वे में कोई चीज मिले। ठीक है, अनयूज चीज है या फिर रिपीटेड चीज है वो आप निकाल दोगे। सो हियर व्हाट ऑप्टिमाइजर इज गोइंग टू डू, रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन के पास से वो क्वेरी लेगा और ऑप्टिमाइजर क्या करेगा, वो बेस्ट क्वेरी सिलेक्ट करेगा। ठीक है, और बेस्ट क्वेरी किसकी हेल्प से सिलेक्ट करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे देयर इज वन स्टेटिस्टिक्स अबाउट डेटा, स्टैटिस्टिक्स अबाउट डेटा। तो यहाँ पे एक डेटाबेस है आपके पास, उसमें क्या है, उसमें बहुत सारा स्टैटिस्टिक्स डेटा है, दैट मीन्स मेटा डेटा है। मेटा डेटा मतलब डेटा अबाउट डेटा, दैट इज मेटा डेटा, राइट? तो वो क्या करेगा, वो उसमें से बेस्ट डेटा लेगा और यहाँ पे आपको हेल्प करेगा बेस्ट क्वेरी इंसर्ट करने के लिए। सो दिस विल गिव यू द बेस्ट क्वेरी। ठीक है, ऑप्टिमाइजर ने आपको बेस्ट क्वेरी दे दी, उसके बाद किसकी टर्न आई? आफ्टर दैट there is execution plan. Okay, after you get the best query, there is execution plan. So in this execution plan, it will create query tree. There is one query tree. If first you are going to create table, then this query will be performed, then this query will be performed. ठीक है, वैसे एक query tree बन जाएगा। Fine. After that, you will be having evaluation engine. So in evaluation engine,
few queries you will get, लेट मी से यू, एक बार एग्जीक्यूशन डेटा आपके पास आ गया, उसके बाद आपके पास इवेल्यूशन इंजन है, तो इवेल्यूशन इंजन क्या करेगा, जो भी डेटा उसको रिक्वायर है वो सारा डेटा वो क्वेरी आउटपुट में आपको करेक्ट आंसर में देगा और अपने डेटाबेस में वो रिकॉर्ड रख लेगा. दिस इज द डेटाबेस. So what it will do, history and everything will be saved, right? So वो अपने डेटाबेस में डेटा रख लेगा और आपको यहाँ पे आंसर देगा. This will be the best answer. Okay, the accurate answer which you need. Fine. So again, everyone, please pay attention here. See, let us brief this method or this diagram. This is the most important diagram of this chapter. ओके, जीटीयू क्वेश्चंस में इस चैप्टर में से ये डायग्राम आता ही आता है, बाकी के टॉपिक्स भी है लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फाइन. So first step is query. In query, you are going to write SQL query that will be in higher level language. This will give you the result of higher level language. Here you are going to insert higher level language and here you are getting the result of lower level language. That means आपको आपका आंसर मिल जाएगा. ठीक है. Now see, first you are going to insert the query in SQL, then parser and translator. What parser is going to do, it will check the syntax. तो कहीं आपने जो लिखा है वो सही है या नहीं, आपकी कहीं पे एरर है तो इट विल नोट दैट एरर एंड इट विल गिव यू द आउटपुट. ओके, कि ये एरर है, पहले इसको चेंज करो, जैसे आपको SQL में अभी मिलती है. एंड देन इज देयर इज ट्रांसलेटर. ट्रांसलेटर क्या करेगा, आपकी लैंग्वेज की जो क्वेरी होगी वो अपनी लैंग्वेज में, मतलब मशीन लेवल की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा. Then there is relational algebra expression. After that there is optimizer, then execution plan. So here you are going to get the best query for your execution plan. Then you are transferring your execution plan into evaluation engine and you are getting the answer. Okay, the accurate data which you have asked for. For example, अगर यहाँ पे आपने लिखा है select star from customer, तो यहाँ customer का सारा डेटा आपको शो करेगा. That is your answer. Fine. So steps of query processing contains this much things. Is it clear? Here parser and translator is there, then optimizer is there, and then evaluation is there. So ये three basic step है. This is the first step, this is the second step, and this is the third step. Okay, everyone, explain optimizer again. Okay, so see through what optimizer does in compiler. कंपाइलर में ऑप्टिमाइजेशन फेज जो होता है वो फेज क्या करता है, इट विल चेक ऑल द डेटा. वो सारा डेटा चेक करेगा, उसमें से वो आइडेंटिफाई करेगा कि कोई डेटा रिपीटेड है या फिर कोई अनयूज्ड डेटा है, तो वो उसको ऑप्टिमाइज करेगा. दैट मीन्स वो उसको अगर 5 स्टेप में कोई आपको आंसर मिल रहा है और उसका बेस्ट वे है कि आपको 3 स्टेप में भी आंसर मिलेगा, तो वो आंसर को 3 स्टेप में कन्वर्ट कर देगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल लेट मी से यू, इफ आई एम राइटिंग हियर a plus b, let me say this, I'm just giving one example, okay, for your understanding. A plus b, that is in let us store this answer in temporary variable t1. This is temporary variable t1. Okay, then I will be saying that t1 plus c, t1 plus c, I am storing this answer in temporary variable t2. ठीक है, तो ये मैंने कहाँ पे स्टोर किया, टेम्पररी वेरिएबल t2 में स्टोर किया. अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि t2 का जो आंसर है वो मैं एक वेरिएबल है मेरे पास, फॉर एग्जांपल d नाम का वेरिएबल है, तो मैं ये आंसर किसको प्रोवाइड करूंगी, मैं आंसर d को प्रोवाइड करूंगी. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे स्टेप्स कितने हुए, 3 स्टेप्स हुए. ए और मुझे बेसिकली मुझे क्या करना था, एडिशन ऑफ ए बी सी दैट आई हैव टू स्टोर इन डी. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ए और बी का एडिशन किया और उसको टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर किया. फिर उसका जो आंसर है उसको मैंने सी के साथ ऐड किया और उसको टेम्पररी वेरिएबल 2 में स्टोर किया. फिर वो जो आंसर है उसको मैंने डी में स्टोर किया. तो यहाँ पे मेरा आंसर 3 स्टेप्स में खत्म होता है. लेकिन बेसिकली अगर आप देखें तो मेरा आंसर एक स्टेप में तो खत्म हो सकता है, राइट? कैसे होगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू डी. तो ये मेरा बेसिकली एक ही स्टेप में खत्म हुआ. लेट मी राइट दैट हियर, a प्लस बी प्लस सी. ठीक है, तो ये आंसर मेरा कहाँ पे खत्म हुआ, यहाँ पे, कि उसको मैंने डी पे स्टोर कर दिया. माय वर्क इज डन, राइट? तो यहाँ पे ऑप्टिमाइजर क्या करेगा, वो चेक करेगा कि अगर इतना सारा आंसर है और अगर वो उसको एक में कन्वर्ट कर सकता है, तो इज इट पॉसिबल दैट यू विल गेट द एक्यूरेट रिजल्ट. यस, इट इज पॉसिबल. सो इट इज गोइंग टू फॉरवर्ड दैट क्वेरी.
ठीक है, तो ये बेस्ट क्वेरी हुई मेरे लिए, तो वो बेस्ट क्वेरी को लेके फॉरवर्ड करेगा एग्जीक्यूशन प्लान के लिए। Fine. Is it clear, Dhruv? Okay. Everyone else, these steps are clear to you? So basically, these are the three steps. First one is parser and translator, then optimizer, and then there is evaluation. Everyone, is it clear? Please write here. Okay, so this is the most important question and I will be asking you this tomorrow. ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या करना होगा, आई विल आस्क ईच एंड एवरी वन, यू हैव टू जस्ट एक्सप्लेन मी द डायग्राम, व्हाट द डायग्राम सेज, आपकी क्वेरी कैसे प्रोसेस होती है, यू हैव टू एक्सप्लेन मी दैट. Fine. So if you have any doubt, then you can ask me. Otherwise, let us proceed further now. So there are three steps. First one is parsing and translation. अब यहाँ पे हमने जो भी देखा डायग्राम में वो हम यहाँ पे स्टेप्स वाइज देखेंगे. ठीक है, बट योर कंसेप्ट शुड बी क्लियर. यहाँ से आपको ये पता चल जाना चाहिए कि आपका कंसेप्ट क्या है. ठीक है. First one is parsing and translation. So for first action, the system must take in query processing is to translate a given query into its internal form. So your given query, that means the query which you are writing in your language or the SQL language. Okay, or if you are writing that in SQL language, then that query first it is going to translate in its internal form. Then this translation process is similar to the work performed by the parser of a compiler. Compiler में parser का role क्या होता है कि वो syntax error या ऐसा कुछ होता है तो वो आंसर करता है कि this is the error, you need to keep semicolon before this thing. Fine. In generating the internal form of the query, the parser checks the syntax of user's query, verifies that the relation names appearing in the query are names of the relations in the database and so on. डेटाबेस में आपने लिखा एक रिलेशन का नाम क्रिएट टेबल कस्टमर, तो अब इंसर्ट करते वक्त भी आप कस्टमर ही लिखोगे, अगर एक भी चीज यहाँ से वहां हो गई तो इट विल गिव यू एन एरर, राइट. सो दिस इज द वर्क. The system constructs a parse tree representation of the query, which it then translates into a relational algebra expression. If the query was expressed in terms of a view, the translation phase also replaces all uses of the view by the relational algebra that defines the view. Okay, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर पार्सर और ट्रांसलेटर क्या करेगा, उसको रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन पे कन्वर्ट करेगा एक व्यू के हिसाब से. ठीक है, व्यू इज सिमिलर टू टेबल बट इट इज नॉट एग्जैक्टली द टेबल. वी आर गोइंग टू स्टडी व्यू in this chapter. After that, there is evaluation plan. So what is there in evaluation plan? A relational algebra operation annotated with instruction on how to evaluate. It is called an evaluation primitive. Now a sequence of primitive operations that can be used to evaluate a query is query execution plan or query evaluation plan. तो अगर अब आपके पास sequence of primitive operations आ गए, you are having sequence of primitive operations here, then you are going to evaluate the query and you are going to get the answer. Okay, so that is evaluation plan. Then there is optimization. It is the responsibility of the system to construct a query evaluation plan that minimizes the cost of query evaluation. This task is called query optimization. अब query optimization है वो अलग अलग चीजों से डिफाइन कर सकते हो आप. ठीक है, so here one example is given to you that if you minimize the evaluation plan for the cost, if you are going to minimize the plan and it minimizes the cost with less efforts, then obviously you are going to go with it. So this thing is called optimization. Once the query plan is chosen, the query is evaluated with that plan and the result of the query is output. In order to optimize a query optimizer must know the cost of each operation. Okay, for this the query अगर आप कोई चीज ऑप्टिमाइज करोगे तो आपको कॉस्ट भी तो पता होना चाहिए.
ठीक है, आप ऐसी क्वेरी तो सिलेक्ट नहीं करोगे जिसका कॉस्ट ज़्यादा है, आप हमेशा वैसी ही क्वेरी सिलेक्ट करोगे जिसका कॉस्ट कम है, right? So here now we are going to see about cost, but this is all about optimization, evaluation, and parsing and translator. Everyone, please take 5 minutes of time and write this, draw this diagram in your notebook, and let me know if you have any doubt here. Diagram draw कर लो, take 5 minutes of time, draw it, and then if you have any doubt then ask me, otherwise keep it in your book. Tomorrow I'm going to ask you each phases. और एक काम करो, आप ये डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो तो साथ में आप एक फेज, हर एक फेज का आउटपुट लिखते जाओ कि क्वेरी है वो हायर लेवल लैंग्वेज होगा, पार्सर एंड ट्रांसलेटर है वो क्या करेगा, ऑप्टिमाइजर के पास आप ये एग्जांपल लिख सकते हो. So you should know what the word is, what the words are saying here. Fine, take your time. After completing, please write here. Yes, Mac, I will do that. Just once everyone complete it, then I will start again.
Everyone, please let me know after completing this. Everyone completed? Completed this? Yes. Okay. What about others? Okay, fine. So, see, I'm explaining this thing again. That is, first you are going to write the query in SQL. That means that will be in higher level language. Then it is going to parser and translator. Parser will check whether the syntax given is correct or not. The relation name, the attribute name which you have written in your query, is it matching to the things which are there in database? अगर आपने रिलेशन नेम में आपने लिखा है कस्टमर, तो डेटाबेस में कस्टमर नाम का कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं? ठीक है, it is the parser is going to check that. Then translator, what translator is doing, it is taking your language and converting the thing into its own language. This is the work of translator here. Fine. And that means machine language, एक लैंग्वेज से अलग लैंग्वेज में. अगर फॉर एग्जांपल इफ यू गो टू, लेट्स से इफ यू गो टू अमेरिका एंड यू डू नॉट नो इंग्लिश, fine. So what you are going to do, you will keep one, you will hire one translator. He will convert your language into that language and that language into your language, so that you both people can communicate indirectly by someone else. Fine. Then there is relational algebra expression. So here you are going to get relational algebra expressions, and then it will go to optimizer. And what optimizer will do, it will take metadata and relational algebra expression, and it is going to translate your query. It is going to optimize your query. It will give you the best query. Fine. Then you are having execution plan. So in execution plan, what you are going to get here, how you are going to execute or how you are going to evaluate your query. You are going to do that thing in execution plan. Then there is evaluation engine. In evaluation engine, your query will give you, your query will be converted into some data that will be required or that can be stored next time. And then it will give you the best answer, the accurate answer, query output. Right? And it will be in lower level language. So everyone, is it clear? Mehak and Ramesh, is it clear? Okay, fine. So these are the three basic steps for query processing, and this is the most important question for your GTU exam. Then now let us see measures of query cost. Now, if you are having more query, how you are going to identify which query is best for you? By the cost, right? There are many factors, cost, memory, human efforts, but right now let us consider the cost factor. Okay. So measure of query cost, how query cost can be identified, that we are going to see here. There are multiple possible evaluation plans for a query, and it is important to be able to compare the alternatives in terms of their estimated cost and choose the best plan. Okay, so what you are going to do, you are going to check the estimated code and you are going to select the best plan.
to get the result, right? We must estimate the cost of individual operations and combine them to get the cost of a query evaluation plan. So see, in one query there can be more than one operation, right? एक query में एक से ज़्यादा operations हो सकते हैं. So here what we are going to do, first we are going to see first we are going to estimate the cost of individual operation and then we are going to estimate the cost of query, right? तो फिर अगर सारे operations का cost आप sum कर लो सारे cost का, so you are going to get cost of query. Right. So the cost of query evaluation can be measured in terms of numbers of different resources, including disk accesses, CPU time to execute a query, and in a distributed or parallel database system, the cost of network communication. So there are many factors which can affect the cost. Right. नेटवर्क अफेक्ट करता है कि आप कौन सा नेटवर्क थ्रू आपकी क्वेरी रन कर रहे हो या फिर आपका सीपीयू का टाइम क्या है क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए या फिर आपकी डिस्क एक्सेस पर वर्क करता है ह्यूमन एफर्ट्स पर वर्क करता है राइट सो दिस आर फ्यू थिंग्स इन विच योर cost depends. For simplicity we just use the number of blocks transfer from disk and the number of seeks as the cost measure. So here right now what we are going to do for simplicity we will consider number of block transfer. That means आपने जो डेटा रखा होगा ब्लॉक के लिए दैट इज योर ब्लॉक ट्रांसफर राइट. अगर एक जगह से लेके दूसरी जगह भेजना चाहते हो तो यू आर गोइंग टू कंसिडर दैट थिंग. एंड सेकेंड थिंग इज नंबर ऑफ सिक. सो व्हाट इज सिक? देयर इज वन सिक. दैट मीन्स आपके पास जो गिवन डेटा है जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको सही जगह पे लोकेट करने के लिए आप जो करते हो उसको वन सिक बोलते हैं. अगर एक बार आपने अपना डेटा सही लोकेशन पे लोकेट किया so that is one sick. Then another again if you are keeping your locating the data of given information into the place where it can be executed तो वो second sick हुआ. ठीक है, that is sick. So here we are going to consider number of block transfer as well as number of sicks. Okay, कितनी sick लगे आपको data locate करने के लिए. So here time to transfer one block that is identified as TT. Time to transfer one sick that is identified TS. Okay. Now cost of B block transfer plus S6 that is given in equation here, that is B, that B stands for block, into TT. TT means time to transfer one block plus sick S into TS that means time to transfer one sick. Okay. तो यहाँ पे क्या हुआ उसका इक्वेशन, आपके पास मल्टीपल ब्लॉक्स है तो मल्टीपल ब्लॉक्स को आपको उसका कितना टाइम लगा उसके साथ मल्टीप्लाई करना है प्लस आपको सिक भी कंसीडर करना है. सो यू आर गोइंग टू ऐड द वैल्यू ऑफ सिक आल्सो. एंड हाउ वैल्यू ऑफ सिक कैन बी एडेड, दैट इज सिक इनटू टाइम फॉर वन सिक, दैट इज टीएस. ओके, so this is the equation. Here is how you can measure query cost. What is sick? Okay, so Ramesh, as I said, sick मतलब आप ये मानो आपके पास कोई डेटा है, कोई इंफॉर्मेशन है, ठीक है. तो अगर आपने डेटा इंफॉर्मेशन को यहाँ पे लिखा, आपकी स्क्रीन पे आपने लिखा, तो वो इंफॉर्मेशन वहां से लेके अपनी सही जगह पे लोकेट होगी, राइट. फॉर एग्जाम्पल आप अभी अगर एपेक्स में क्वेरी लिख रहे हो तो एपेक्स में अगर आप ऊपर क्वेरी लिख रहे हो GNU मतलब आपको डिस्प्ले हो रही है तो वो उसकी थोड़ी ना आई मीन दैट इज नॉट द प्लेस वेयर योर क्वेरी इज गोइंग टू स्टोर. तो वो क्या करेगा, वो अपनी प्लेस में जाएगा, राइट. दैट कैन बी वन प्लेस जहाँ पे आप क्वेरी लोकेट करोगे, जहाँ पे आप अपना डेटा लोकेट करोगे, फिर वहां से वो क्वेरी लेके आपको डिस्प्ले करेगा. दैट इज द सीक्वेंस, दैट इज द क्रोनोलॉजी. ठीक है, तो ये क्या मतलब हुआ इसका सिक का, कि आपके पास जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है अगर वो आप लेके कहीं और ट्रांसफर करते हो वहां से फिर आपको वापस मिलता है, तो दैट इज वन सिक, वी कॉल इट वन सिक. तो ऐसे आपके पास तो कितने सारे इंफॉर्मेशन होगी, आप हर बार क्वेरीज में लिखोगे, राइट. तो दैट इज नंबर ऑफ सिक. एम आई क्लियर रमेश? इज इट क्लियर? Okay, fine. So basically measurement of query cost can be done on different ways. There are different ways to measure the query cost, and there is number of block transfer and number of seeks. Fine. Here one equation is also given.
Now, the cost of all algorithms that we consider, it depends on the size of the buffer in main memory. अब हम जो भी कोस्ट कंसीडर करते हैं वो किस पे डिपेंड करता है? मेन मेमोरी, बफर इन मेन मेमोरी, उसकी साइज पे डिपेंड करता है, ठीक है? द रिस्पॉन्स टाइम फॉर अ क्वेरी इवेल्युएशन प्लान, व्हाट इज द रिस्पॉन्स टाइम? आपने जो क्वेरी लिखी और आपकी क्वेरी को रिस्पॉन्स मिला, आपकी क्वेरी को आंसर मिला, दैट इज द रिस्पॉन्स टाइम, राइट? So the response time for a query evaluation plan, assuming no other activities going on in the computer, would account for all this cost and could be used as a measure of the cost of the plan. ठीक है? So what does this says? इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो भी रिस्पॉन्स टाइम लगाया, मतलब जो रिस्पॉन्स टाइम है आपका, वो आप ये एज्यूम करके लेना कि कोई अदर एक्टिविटी आपकी कंप्यूटर में प्रोसेस नहीं कर रही है. राइट नाउ इट इज ओनली योर क्वेरी दैट इज प्रोसेसिंग इन योर कंप्यूटर. ओके, would account for all this cost and could be used as a measure of cost of the plan. तो ये चीज, ये टाइम किसके लिए मेजर हो सकता है? रिस्पॉन्स टाइम के लिए ये टाइम मेजर हो सकता है. ठीक है, अब रिस्पॉन्स टाइम है वो भी तो हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. रिस्पॉन्स टाइम को भी तो अलग अलग, रिस्पॉन्स टाइम की भी अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स होती है, right? So here the response time of a plan is very hard to estimate without actually executing the plan. तो अगर आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो जो भी आपको रिस्पॉन्स टाइम मिलेगा वो आपको एक्यूरेट नहीं मिलेगा. दैट कैन बी नियरेबल बट इट कैन नॉट बी एक्यूरेट, राइट? फॉर द फॉलोइंग रीजन. सो देर आर टू रीजंस why you cannot easily do that. That is, first reason is the response time, it depends on the contents of the buffer when the query begins execution. ठीक है, क्वेरी एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगी तब रिस्पॉन्स टाइम किस पे डिपेंड करेगा? बफर पे, है कि बफर कैसे वर्क कर रहा है. दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल व्हेन द क्वेरी इज ऑप्टिमाइज्ड एंड इट इज हार्ड टू अकाउंट फॉर इवन इफ इट वर अवेलेबल. तो अगर अभी तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल नहीं होगी, जब आप ऑप्टिमाइज कर रहे हो क्वेरी, जब आप बेस्ट क्वेरी सिलेक्ट कर रहे हो, तब आपके पास नहीं होगी ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल. और अगर ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है भी तो भी आप उसको ध्यान में नहीं रख सकते हो. यू कैन नॉट टेक इट इनटू अकाउंट इजीली, राइट? बिकॉज एट लास्ट इट ऑल डिपेंड्स ऑन बफर. बफर कैसे वर्क कर रहा है, बफर कितना टाइम ले रहा है, इट डिपेंड्स ऑन बफर, राइट? सो रिस्पॉन्स टाइम ऑफ क्वेरी कैन बी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई. This is the first reason. And second reason for the thing is that is, in a system with multiple disks, the response time depends on how accesses are distributed among disks, which is hard to estimate without detailed knowledge of data layout on disk. तो अब अगर आपके कंप्यूटर में एक से ज्यादा डिस्क है, तब सारे डिस्क में कैसे कैसे डेटा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो आपके पास होना चाहिए. अगर ये नॉलेज आपके पास नहीं है तो फिर आप, दिस इज हार्ड टू आइडेंटिफाई कि कौन सी डिस्क पे क्या क्या चीजें चल रही है. तो अगर इतनी चीजें एक डिस्क पे चल रही है तो वो खुद कितना टाइम लेगा. ठीक है, तो बेसिकली रिस्पॉन्स टाइम आपको कैसे मिल सकता है कि आपका बफर कैसे काम करता है, आपकी डिस्क के पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ना. सो दिस इज द टू रीजन. फर्स्ट रीजन इज फॉर बफर एंड सेकंड रीजन इज फॉर डिस्क. मतलब दिस आर द मेन पॉइंट्स एंड यू कैन रिमेंबर दिस थिंग. Interestingly, a plan may get a better response time at the cost of extra resource consumption. So here what can be done? Plan will get better response time. How it is going to get better response time? अगर आपके पास एक्स्ट्रा रिसोर्स कंजप्शन है तो आप ये बोल सकते हो ना कि ना माई फ्यू थिंग्स विल बी डन ऑन दैट पार्ट, सो हियर इट विल नॉट टेक मच टाइम और इट विल नॉट टेक मच स्पेस, तो वो इजीली रन हो सकता है, राइट? दिस थिंग कैन बी डन. Okay, so these are the measure of query cost. Any doubt here, anyone, in this both slide? Any doubt here or here? Am I clear? Please write here.
Okay. So now we are moving to next topic. This topic is selection operation. Okay, this topic is selection operation. So now we know that we are having more than one search algorithms, but which algorithm we are going to use and what will be the consequences of that algorithm, that we are going to see here in selection operation. So selection, when I say selection operation, that means selection operation for your query. आपकी आप अपनी query कैसे select करोगे? If you are having 5 queries, how you are going to select which query is the best for you? That we are going to see here. Okay. So in query processing, the file scan is the lowest level operator to access data. So here in query processing, whenever you are processing your query, at that time file scan is the lowest level operator to access data. And what is file scan? File scans are search algorithms that locate and retrieve records that fulfill a selection condition. Now see, there will be few conditions given for selecting a query. ठीक है, तो फाइल स्कैम वो अल्गोरिथम्स है, सर्च अल्गोरिथम्स है, जो क्या करेंगे, वो कंडीशन को ध्यान में रखेंगे और आपको डेटा और लेट्स से डेटा और रिकॉर्ड रिट्राइव करके आपको शो करेंगे. ठीक है, इट विल गिव यू द रिजल्ट, दैट इज फाइल स्कैन. In relational systems, a file scan allows an entire relation to be read in those cases where the relation is stored in a single dedicated file. So here in relational system, that means जहाँ पे database, जहाँ पे आपके अलग अलग relation store है, वहाँ पे क्या होगा, file scan is going to allow entire relation, मतलब पूरे table को allow करेगा read करने के लिए वो सारा cases, जिससे single या फिर dedicated file उससे attach होती है. ठीक है, अगर एक टेबल है, फॉर एग्जांपल हमारे डेटाबेस में एक टेबल है, तो फाइल स्कैन क्या करेगा, वो टेबल को अलाउ करेगा कि आपको जो भी डेटा एक्सेस करना है, मतलब रीड करना है, यू कैन रीड दैट डेटा. ठीक है, क्योंकि एक टेबल है वो दूसरे टेबल से मैच हो सकता है, राइट, दैट कैन बी कनेक्टेड थ्रू फॉरेन की, रेफरेंस की. So it is allowing them. So here we will be studying about two algorithms. There are two scan algorithms to implement in selection operation. First one is linear search and second one is binary search. So here we are going to see two such algorithms. First one will be linear search and second one is binary search. So these things we are going to see tomorrow. Any doubt till now? Anyone, any doubt till now? No doubt?